Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah Almighty, who is most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. I am Ushna Tariq, signing in from the prestigious and multi-dimensional platform of ACDC Studio, where insights go global. Dear viewers, ISP has maintained its precedent to provide knowledgeable and entertained information to its students, even in this serious time of pandemic. So by keeping in view, today we have chosen a very important topic और इसके अंदर हम एक यंग फिल्म मेकर के साथ बात करेंगे. But before moving towards my guest and towards my co-host, let me introduce the topic into chunks. The name of topic is Revival of Cultural Norm Through Filmmaking. As the universe of film and cinema serve as an inscription in the society which it reigns in. And the silver screen represents one of the most creative ways of conveying human imaginations, social values, and political evolutions as well. And after an initial flying start and subsequent stagnation, the ongoing revival of industry could offer more than mere entertainment and artistic content. So for that, I would like to welcome my co-host, Mr. Rana Sarmad Mahmood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. A very warm welcome to our viewers. मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे. अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, तमाम मुसलमानों को खैर आफियत से रखे. Today we have selected a very interesting topic. थोड़ा सा हमने कोशिश की है जो हम तालीम, तरबियत और जो माशरे के बिगाड़ हैं उनसे निकल के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए. इंटरेस्टिंग इन सेंस के एटलीस्ट हमारे ऑडियंस के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो सके. टुडे वी हैव सिलेक्टेड द टॉपिक रिवाइवल ऑफ कल्चरल नॉर्म्स थ्रू फिल्म मेकिंग. व्हाई फिल्म मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, हाउ one one common man can develop his or her interest in filmmaking. So for that purpose we have requested a very special guest living far away from Pakistan. आपका थोड़ा टाइम कनाडा में गुजर रहा है, अमेरिका में भी गुजर रहा है. टॉकिंग अबाउट योर कैरियर, हाउ यू स्टार्टेड. माशाल्लाह आप हाफिज कुरान हैं और एक हाफिज कुरान के बारे में अक्सर सुनने में आया है कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं. सो टॉकिंग अबाउट अवर गेस्ट अबू बकर खान, इफ आई टॉक अबाउट द कैरियर, द वे ही स्टार्टेड, माशाल्लाह से आपने आज से 12 साल पहले कुरान पाक हिफ्ज किया. उसके बाद आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, बैचलर्स इन कम्युनिकेशन. आपका जो मेजर्स है उसमें आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी को और एनवायरमेंटल्स को देखा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने इसमें पॉलिटिकल कैरियर को भी अडॉप्ट किया. 2018 you ran for the seat of Vancouver City Councillor, and presently you are working as a director, editor, videographer, filmmaker. आपने टेलीफिल्म बनाई है, आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं. आपकी रिसेंट जो एक दो फिल्म्स मेरी भी नजर से गुजरी हैं जिनका शायद बिहाइंड द कैमरा मैं भी पार्ट रहा हूं, उसमें यू आर वर्किंग ऑन राजा रंजीत सिंह, फूलन देवी, फॉर माई फादर, फाइटर कैनवास, हमारे अरेंज. ये आपकी वो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं. मीनवाइल आप पॉलिटिकली, आप एंटरप्रेन्योरशिप में, आप पब्लिक स्पीकिंग में, यू आर माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड. आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन यू. और जिस बेहतर तरीके से आप लेकर चल रहे हैं, एंड आई एम होपफुल कि वो उस इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम आपकी ही जबानी उसको कंटिन्यू करेंगे. सो वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर Rana Abubakar Khan from Canada, come America with us. Assalamu alaikum, Abubakar. Wa alaikum assalam. How are you? That is a very nice introduction. Shukriya, yaar. Thank you so much. मैं बस एक आम आदमी हूँ. You keep this introduction in your personality. In fact, we have a remarkable person. हमारे पास एक खास किस्म का आदमी है जिसको हमने इस 1 घंटे में अपने लोगों के सामने पेश करना है. जो अबू बकर की अचीवमेंट्स हैं वो सारी हमने अपने ऑडियंस के साथ शेयर करनी है. अबू बकर, कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, आई रिक्वेस्ट यू इन स्टार्ट कि हम इसको थोड़ा सा आपकी अचीवमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर जो हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बहरान का शिकार थी कुछ अर्सा पहले, मुझे ये वर्ड थी का इसलिए यूज करना पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिवाइवल हो रहा है, एंड विद द टाइम बीइंग हम उसको कवर भी कर रहे हैं. यू आर वर्किंग इन मल्टी कंट्रीज, आप ट्रेवलिंग भी करते हैं, आप डिफरेंट हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार से भी मिले हैं. आपका क्या एक्सपोजर रहा है इस फिल्म मेकिंग के हवाले से, एंड हाउ यू डेवलप योर इंटरेस्ट इनटू दिस फील्ड? वी वुड लाइक टू हैव योर एक्सपीरियंस.
तो आप कह रहे थे कि मैंने हिफ्स पहले किया है। तो जब मैं 13 माशाल्लाह। साल का था, मैं उधर जामिया शफिया में पढ़ता था पाकिस्तान में, लाहौर में। तो इस वजह से मैंने उर्दू थोड़ा सा सीख लिया था। तो मुझे याद है जब मैं इधर अमेरिका में और कनाडा में पढ़ता था और स्कूल पे जाता था कि यार हम बस हॉलीवुड की फिल्म देखते थे हर दफ़ा। It was a white guy, a white actor, same thing, same ही story हर दफ़ा हम देखते थे। और जब मैं पाकिस्तान में जाता था, पाकिस्तान में बस सारे न्यूज़ चलता था और एचबीओ चलता था। तो एक ही दो चैनल होते थे, अमेरिकन अमेरिकन मूवीज एंड बस न्यूज़। बस यही था जो मैं देखता था। तो what I realized was that you know what, हमने हमारी कहानियां बतानी है। We have to tell our own stories, and we have to make movies. तो इस्लाम में भी वो कहते हैं कि जो सारे नबी थे, अल्लाह would give them the tools of the people। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो जैसे वो सारे लोग पोट्री करते थे, फिर कुरान आ गया था, उन्होंने क्या था यार ये पोट्री को दफा ये mean like leave it alone, the poetry is not even close to Quran, ये means next level। Hazrat Musa जो था, Musa alayhi Islam, it was magic, all of them would do magic, but he had Allah with him and he was able to speak the language in a sense। और ईसा alayhi Islam के पास it was the healers। तो जब मैं अभी देखता हूँ जो दुनिया हम अभी रह रहे हैं, it's content। सारे लोगों के पास फोन है, everybody's watching movies, it's all content। That's the best way to get to the people। So that's how I kind of got into films, Hifz ke baad, then I got into films later on। So it's a funny story। Okay. Okay. So, first of all, Abubakar, a very warm welcome at the platform of SCDC Studio from my team, from myself as well। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और जैसे कि सरमद सर ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज अ ह्यूज इंट्रोडक्शन इवन एट दिस यंग एज। तो हमारे जो यूथ है माशाल्लाह, वो तो पबजी खेलने से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो वो क्या कुछ प्रोडक्टिव करेंगे इसके बारे में तो हम बात नहीं करें तो बेहतर है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बात किया कि हम एंटरटेनमेंट और आर्टिस्टिक डिजाइनिंग से हट कर क्या हमारा सिनेमा, क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री, क्या हमारा मीडिया कुछ ऐसा प्रोडक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है जो कि हमारी नेशन को सर्व कर सके पॉजिटिवली? तो जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं सरमद से मिला था फरवरी मार्च में, मेरी टीम आई थी अमेरिका और कनाडा से। तो हम एक महीने के लिए उधर ही थे और हम बीकन हाउस गए थे, हम लम्स गए थे, हम स्कूल्स पे गए थे और मेरे दोस्त हैं जो उधर प्रोफेसर होते हैं। तो मैंने उनके साथ बात किया था मीडिया के बारे में। एंड हमने एक सेशन किया था बीकन हाउस में, उनकी मीडिया क्लास के साथ। और मुझे याद है कि मैं उनको बता रहा था कि कौन सी आपने कहानियां बतानी है, लाइक व्हाट स्टोरीज यू वांट टू टेल। वो सारे कहते यार लोगों को प्यार की कहानियां पसंद है, एंड वी वांट टू मेक लाइक हॉलीवुड फिल्म्स एंड ये सारा कुछ। एंड आई टोल्ड देम, आई सेड स्टॉप, द बेस्ट स्टोरी यू कैन टेल इज योर ओन स्टोरी। तो अभी पाकिस्तान में ये चीज चल रहा है कि लोग अपनी कहानियां नहीं बता रहे। They want to be like Hollywood and they want to be like Bollywood, but they don't want to be like themselves। तो इस वजह से I'd say the best stories are जब when you tell your own। And पाकिस्तान right now, अभी पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता वो उनकी कहानियां क्या है। जब मैं उधर लाहौर में था, तो हम अभी हिस्ट्री के फिल्म बना रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, that time period, right? There's a lot of history there। और मुझे पता है कि जब मैं जाता हूँ लाहौर में, हम उधर इस्लामाबाद गए थे, खैबर पास गए थे, उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर तुर्कम भी गए थे, सारी जगह we went all around। And what I realized is that जो हमारी जनरेशन है उनको हिस्ट्री का नहीं पता, और हमारी हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है। We have a very interesting, like it's extremely interesting। And अगर हम हमारी हिस्ट्री को नहीं, if I can learn about our history, फिर हमको we're not going to know who we are at the present moment, and our content will suffer। हम content सारे लोगों के लिए बनाएंगे पर हमारे लिए नहीं बनाएंगे। And that's the biggest thing, you have to make it for yourself। वेरी राइट। Okay. तो इसमें अबू बकर आपने जैसे आपके इंट्रोडक्शन मैंने कहा कि आपको काफी ज्यादा चीजें इनहेरिटेड भी शायद मिली हैं। आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, तो आपके फादर और आपके रिलेटिव्स में काफी लोग हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग में तकरीबन काफी सदियों से चलते आ रहे हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट वहां से डेवलप हुआ या आपने किसी टाइम पहले डिसाइड कर लिया था कि आई हैव टू गो फॉर प्रोडक्शन, फॉर एडिटिंग, फॉर शॉर्ट फिल्म? ये कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहा और अब आपका प्रोफेशन बन गया?
नहीं, my dad वो सारे फिल्म में नहीं होते थे। मेरे एक अंकल है पाकिस्तान में, उसको फिल्म्स का बहुत शौक है। He directed some films. My grandfather Hollywood में 60s में he went to go and act, so he was one. Um, तो the way that I got it is क्योंकि सारे लोग जब हम मिलते रहते थे, जो सारे आदमी हैं, सारे अंकल्स या कजिन्स, सारे फिल्म्स ही देखते थे और फिल्म्स के बारे में हम सारे बात करते थे। So I realized that films is such a great way to have conversations. जैसे अगर आप काले हो, अगर आप चिट्टे हो, whatever skin color you are, whatever age you are, you can watch the same movie and you can start having a conversation movie के बारे में. So what I Hmm. realized जब मैंने politics में इधर Vancouver में I ran for politics क्योंकि कोई मुसलमान नहीं था. So I ran, and what I realized was that again, अगर मैं हर एक आदमी के साथ बैठूंगा and I'll talk to them one by one, that's fine. But films can change people's minds. अगर आप एक Yes. अच्छी फिल्म देखोगे जो दिखाएगी एक आदमी और एक लड़की की कहानी in Pakistan as an example, and it's authentic, it'll change your perspective on Pakistan. क्योंकि in the West a lot of people वो देखते हैं और वो उनको लगता है कि पाकिस्तान में बस बम हर दफा छूट रहे हैं, every day there's a bomb, oh my god, सारे लोग मर रहे हैं, and you know what I mean, everybody's a terrorist. पर जब मेरी टीम मेरे साथ आई थी, वो सारे सिख हैं, तो वो इंडिया गए हैं पर पाकिस्तान कभी नहीं गए थे। जब वो आए थे, they said Pakistan is the best place ever, तो इतना मजा आया था, पर उनको नहीं पता था क्योंकि जब उन्होंने गूगल किया था पाकिस्तान tourism, it was like, oh man, something bad might happen to me. So that's where I realized कि films, you can change people's perspective. Films, it's the best way Yes. to really change if it's a good film. तो पाकिस्तान में अभी जैसे आप पूछ रही पहले, Pakistan needs to focus more on um, it needs to focus more on the script writing. मैं एक Hmm. एक्टर है उधर पाकिस्तान में, उसके साथ we had a very good meeting, उसका नाम है शेरिया मुनव्वर। तो उसने एक फिल्म Party Hard Love किया था। He's done a few different films और उसके साथ we were Hmm. doing a long discussion about, you know what, um, we have to work better on हमारी scripts, हमारी जो film editing, all of that, क्योंकि अभी कमजोर है। अभी we're really good at, जैसे वो क्या कहते हैं, उर्दू के ड्रामे, सबसे बेहतरीन है उर्दू के ड्रामे में। पर वो भी same stories हर दफा, oh the girl, she doesn't want to get married to the guy, her dad is dying, and you know what I mean, same, oh my god, abuse, and it's the same type of story. पर जैसे उर्तुगाल का अभी सारे बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में उर्तुगाल आ गया है Hmm. टर्की से, और वो सारे कह रहे हैं, oh my god, पाकिस्तान का उर्तुगाल किधर है। तो ये काम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि working on that needs to happen. But it has to be good quality and good story, ये दोनों चीजें हमने इसके ऊपर और काम करना है। अच्छा। Yes. जैसे कि आपने अबू बकर पहले बात की दैट फिल्म्स कैन चेंज ह्यूमंस पर्सपेक्टिव क्योंकि इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है आपकी साइकी के ऊपर, कॉग्निशन के ऊपर। एंड यू आल्सो टॉक्ड अबाउट अर्तुगरुल गाजी। तो टर्की इज डूइंग अ लॉट फॉर द रिवाइवल ऑफ द हिस्ट्री, फॉर द रिवाइवल ऑफ द इस्लाम, but what should be the responsibility of Pakistan for the revival of their history as well? History might be political or whatsoever. तो जो मैं कहूँगा is, look, जैसे उर्तुगाल वो कितने साल है, like 400-500 years whatever, बहुत पुराना है। Pakistan has a rich history, Hmm. but we keep focusing only up to 47. 47 तक, that's not a long time. लोगों को नहीं पता, उससे पहले we have a deep history. Alexander the Great came all the way to Punjab. He came with his army to invade. आपको जैसे Ahmed Shah Abdali, there's so much stuff that's happened in the region. जैसे मैं अभी बस महाराजा रणजीत सिंह के बारे में फिल्म बना रहा हूँ, right? क्योंकि he had the Lahore Darbar, Musliman, Sikh, Hindu, at that time we're living together, and लोगों को नहीं पता, like there's different storylines and different narratives जो असली नहीं है क्योंकि people are using to divide us. पर जो मैं देख रहा हूँ अभी पाकिस्तान में, it's a great time to unite people. India is trying to divide everyone, पर पाकिस्तान कह रहा है कि look, for the Sikhs, the यात्रियां, opening up Nankana Sahib, Kartarpur, all these things, I think Pakistan's realizing, hey, we have to be more open. And Islam is an open religion. Hmm. Islam is a religion of being loving and kind, not being angry and fearful and saying, "Hum aapse behtar hain." That's not Islam. Islam was not spread that way. So for me, I think that we need to dive deeper into our history, and our history goes further back than 47 as well. Or yeah, I've never really seen a good film about Qaid Azam or Alam, like, but I haven't. Maybe it Hmm. exists. I didn't see it, right? And we have to make these films that then
जब गोरे लोग, when they watch, to say, wow, I didn't know anything about this guy. I mean, we need to make really good quality films, not low quality films, क्योंकि कोई और नहीं बना. You mean like we have to keep ourselves, वो क्या कहते हैं इस्लाम में ihsan, excellence. We need to have excellence in everything that we do. राइट. पाकिस्तान इज बेसिकली हेवन ऑन अर्थ. अगर हम इसमें देखें तो हमें अल्लाह पाक ने हर उस सलाहियत से नवाजा है. हमारे मुल्क में सब कुछ मौजूद है. अबू बकर, टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट, व्हाट यू रियली फील पाकिस्तान इज लैकिंग इन प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग? किस वजह से हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफी पीछे चली गई? लाइक वी आर स्टिल नॉट एबल टू कम्पीट विद हॉलीवुड और लॉलीवुड. व्हाट यू पर्सनली फील, किस चीज की कमी है हमें? तो जैसे आप पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान के फिल्म्स, there's a period of time where कोई फिल्म्स नहीं हो रही थी. याद है? There's a film, a period of time. True. Right? So what happened is that now a lot of the generation suffered. So the one thing that's big about that is उनके पास वो skills नहीं है, technical skills नहीं है. और जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था, I saw वो technical skills इतना नहीं सिखा रहे, क्योंकि they don't even know the technical skills that well. Right? So that's one big thing. और दूसरी चीज है कि a lot of kids think that हमको पास पैसा, we need to have पैसा to tell a story. You don't need money to tell a story. You can use it on your iPhone. अब वो पूरी फिल्म्स बनाते हैं iPhone पे भी as well. Like I'm just saying that the issue, पाकिस्तान का सबसे बड़ा issue जो मैं देख रहा हूँ, इसके लोग want to be Hollywood, they want to be, जैसे आप कह रहे हो, Nollywood, or they want to be Bollywood, but they never want to be themselves. और हम हॉलीवुड की फिल्म्स क्यों देखते हैं यार? It's all the Jewish people. उनकी फिल्म जैसे Schindler's List, Goodfellas, जो भी है, it's, or Black Panther, it was created by their own community. जैसे Schindler's List was made by Steven Spielberg, वो भी Jewish है. He told his story, his community story. तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, we have to tell our stories. Don't you think that we are copycats? कि हम लोग copycats, हम copy material पे ज्यादा जाना चाहते हैं. Like in पाकिस्तान, एक बच्चा पैदा होता है, अगर उसको लगता है that he can act well, he can perform well, he can sing well, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक्टर बनूं, मैं सिंगर बनूं, मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊं और मैं अपना एक नाम पैदा करूं. बट डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में इस डिपार्टमेंट को अच्छा नहीं समझा जाता? वो पेरेंट्स, वो माशरा, वो लोग उसको कदर की निगाह से नहीं देखते, जबकि यही लोग हमारे यूरोपियन स्टेट्स में, बाकी कंट्रीज में प्रॉपर इक्वली अपना मकाम रखते हैं. तो अबू बकर, इसके पीछे रीजन क्या है? Why this is happening in Pakistan? Why this kind of mindset? So अभी एक someone said, Rana Shahir said, you know what, we need budgets. हमने budgets लेने हैं. तो I'll tell you here, इधर भी Hollywood में सारे लोग पूछते हैं पैसे के बाद. I need money. We need money to make it happen. And without money, it's not going to happen. But यार, first you have to do all the other work to get ready. क्योंकि जब पैसा आएगा, then you have to decide what to do with it. And I think right now, that's the issue, is that we don't know what stories we want to tell, जैसे मैं कह रहा हूँ. Because it's all about the story. So I think Pakistan is now, alhamdulillah, it's at a good place. Festivals में, a lot of Pakistanis जो diaspora में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, they're doing a good job of winning awards. Pakistan, there's a lot of Pakistanis that are winning awards right now. So I do see कि हमारी जैसे cultural history is so rich that when we own our stories, good things happen. So I think that's the issue again, is that अभी लोगों को नहीं पता. जब यार मैं बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ, सारे कैफेज में बैठते हैं, कोई उर्दू नहीं बोलता. If you speak Urdu, people look down on you. Oh यार, ये उर्दू क्यों बोल रहे हैं? हम अंग्रेजी में बात करते हैं. Angrezi is such a bakwas language, man. Sorry for swearing. Urdu is such a it's a pyari language, right? It's like we gotta understand. We have to own who we are. So we're sitting at cafes, Pakistan में cafes में बात करते रहते हैं, and then we're trying to be like Hollywood. Hollywood is a boring. मैं Hollywood में रहता, I live there. Hollywood is a messed up type of place. तो मैं ये इस वजह से कहता हूँ कि we need to again figure out who we are. What does it mean to actually be Pakistani? जैसे आप कह रहे, what does it mean? What does it really mean? Like, oh, pride in our land? No, what does it mean? Tell me stories. Tell me Pakistani stories, and write it down in a script. क्योंकि movies बनती हैं based on a really, really good script. You get a really, my job, मैं producer हूँ. I don't edit, I don't direct, मैं बस producer हूँ. तो मैं जो देखता हूँ is I look for a really good script. जब मैं script को ढूंढता हूँ, then I get a director. Then I get a producer. I mean, not a producer, sorry, an actor. Then you start gathering everything. जैसे
It's the foundation of a movie, is a script. So that's what I'm saying is the first issue for me is we need to realize कि हमारी कहानियाँ क्या है. Then we do the technical skills as well. It'll all come together. But right now, I'll give you an example. आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में what's the issue? तो जैसे it's a very religious country. Do you agree? Pakistan's a very religious country. True. And I think what's his name? Hamza Abbasi was saying, you know what? It's time to get into Islamic content. And I said, yes, it is time to get into Islamic content because at the end of the day, सारे मस्जिद अभी बंद है कोविड की वजह से. इधर सारे मस्जिद बंद है. I don't know about Pakistan, but इधर सारे मस्जिद बंद है. तो मैं बात कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुल गए हैं सारे. अब खुल गए हैं पर कोविड भी खुल गया है. You know what I mean? So it's like, what do you do? What do you do? Right? So इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि at the end of the day, सारे लोग content अभी देख रहे हैं. So how do you spread Islam to teach good quality, like use good quality content and actually, like, you know what I mean? It's the best way to actually spread good characters, morals, and values. अभी यार इधर सारे लोग एक show Tiger King देख रहे हैं. Like it's a random show. You know what I mean? Like people are watching whatever they'll watch. क्योंकि there's a hunger for quality content जो दिल के साथ बात करता है. So that's the thing is that even this in our country, I agree that we need to put more money. Someone said that we need to have bigger budgets for sure, eventually going into content, because if we do that and if our content goes around the world, फिर और लोग पाकिस्तान आएंगे tourism के लिए. They'll see, oh, Pakistan is a wonderful place, and they'll come for tour, and then more money will come to Pakistan, which we can then put back into films. True, very true. Perfect, Abubakar. You have said a very right thing. I can't hear Ushna. You can't hear me? I can't. Wait, Ushna, I can't hear you. Samatha, am I audible to you? जी जी बिल्कुल मैडम आवाज आ रही है. आप दोबारा जरा ज्वाइन कीजिएगा. Okay. I think she might have to join again. I can't hear her. That's weird. Okay, Abubakar, you are talking about the reality. Actually, we people are full of complex. हम show off ना करवाएं ना तो हमें सुकून नहीं मिलता. What I feel कि English is just a language. हम लोगों ने इसको अपनी शनाख्त बना लिया. हम कहते हैं हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, उर्दू हमारी कौमी जबान है, लेकिन उस कौमी जबान को हम लोगों को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आपने खुद यूज किया. हम स्कूल में चले जाएं, हमारे जितने जूनियर लेवल के स्कूल्स हैं, वहां पे बच्चे को सिखाया जाता है, यू जस्ट हैव टू टॉक इन इंग्लिश. There is nothing more than English. English is everything. What is this rubbish? Actually, we are doing the same. जो हम लोग बाहर से सीख रहे हैं, हम वो अपने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. फिर हम कहते हैं हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, हमें कंटेंट नहीं अच्छा मिल रहा, हमारे पास एक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, हमारे पास बजटिंग के इशू हैं. थिंग इज दैट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव होना ज्यादा जरूरी है. आपने बात की हिस्ट्री को हम भुला देते हैं, हम हिस्ट्री पे वर्किंग भी नहीं करते, हम उस चीज को अप्रोच करते हैं जो वक्त की जरूरत होती है. लेकिन जिस तरह से आप अमेरिका और कनाडा में बैठ के हिस्ट्री पे बात कर रहे हो, आपने पाकिस्तान विजिट किया, आपने 2019 स्टार्ट में बड़ा अपना टाइम पाकिस्तान में स्पेंड किया, आपको क्या बुराई नजर आई है हमारे मुल्क के लोगों में इस फिल्म मेकिंग के हवाले से? आपने बात की कंटेंट इनका ठीक नहीं होता. कंटेंट के अलावा आपको क्या लगता है जिसमें हमें और वर्किंग की ज्यादा जरूरत है तो हमारा डिपार्टमेंट ये ग्रो कर सकता है, खासकर जो फिल्म मेकिंग है? तो जब मैं गया था पाकिस्तान, व्हेन आई वाज देयर, जो मैंने देखा पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतना प्यार है. देयर इज अ लॉट ऑफ लव. पाकिस्तान के लोगों के दिल के अंदर इतना प्यार है. और मेरी टीम भी ये कह रही थी यार पाकिस्तान में लोगों के पास वाओ, यू मीन दे हैव अ लॉट ऑफ लव. एंड द इशू इज दिस सरमद के जो लोग अभी फिल्म सीख रहे हैं पाकिस्तान में वो अपर क्लास से होते हैं. एंड उधर पाकिस्तान में आपको पता है व्हेन यू अपर क्लास, आपके पास बड़ा घर है, जैसे 1-2 कनाल का घर है और बड़े बड़े वॉल है. देयर इज अ लॉट ऑफ बिग वॉल्स दैट आर बिटवीन यू. तो जो असली कहानी है इट्स विद द लोग, द रियल पीपल, दे हैव द रियल स्टोरीज. पर जब हम घर में रहते हैं यार, हम कार्ल्स जूनियर पे जाते हैं या मैकडॉनल्ड्स पे जाते हैं या हम कोई डंकिन डोनट्स पे जाते हैं, तो हाउ आर वी लिविंग, हाउ आर वी पाकिस्तान, लाइक वेयर इज द पाकिस्तानी पार्ट? फिर हम बस न्यूज़ देखते रहते हैं. दैट्स इट, दैट्स आवर लाइफ. The real stories are outside of the mansions. They're outside of the expensive university in the compound. They're outside of that. तो ये मैं कह रहा हूँ कि that's where the stories are. There's a divide. अभी इतना बड़ा divide है
कि लोग जो अभी कहानियां बता रहे हैं, there's the rich people that are trying to tell the stories, and they don't really understand the essence of Pakistan. And the essence of Pakistan to me is the people. That's the biggest thing. It's not even the location, it's the people. And जो मैं कह रहा हूँ कि what's so crucial is how do you showcase वो जो प्यार है into films? How do you show that to people? Right? And that's missing right now. That's the part that's really, I think, if you get that part down, then everything else will start working. It'll happen even more and more. So I have a lot of faith in Pakistan and the people. I have a lot of faith in them. And जैसे आप कह रहे हो कि optimism is crucial for sure, right? तो मैंने एक quote देना था to all the people that are watching कि a group of people that forget their history, they are not condemned to relive it, but they are condemned to forfeit it. तो ये अभी हो रहा है because we don't know our own history. तो यार हम we want to be like जैसे आप कह रहे हो like the British. हमने अंग्रेजी की तरह बना like the people that colonized us. We want to be like them. पर यार हमारी history and our arts and culture is way better than theirs. There's a reason why they came to colonize us. क्योंकि उन्होंने जैसे अभी मैं आपको a small story लाहौर फोर्ट में जब ब्रिटिश आए थे, the Lahore fort was so complex, the water system there, उनको नहीं पता था, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है. So they broke it and they started destroying the picture wall जो उन्होंने अभी सही किया है, because they didn't understand it. So that's what I want to say is that we need to, again, going back to my main theme, understand हमारी कहानी, understand who we are, and our content will just get better from that. True, Okay. very true. Okay, Abubakar, am I audible to you right now? Yeah, I can hear you. Okay, I'm sorry for the distortion. Okay, you were talking about colonization. So एक question मेरे mind में आया है that what do you think? Are we still living under the aftermaths of colonization या हम आगे further move कर चुके हैं? तो जब मैं उधर I was sitting at a coffee shop in Karachi, तो मुझे याद है कि 4-5 young guys were sitting there, and वो मेरा सर दुख रहा था, so I needed वो क्या कहते हैं, the headache Permadol or क्या कहते हैं, Panadol. Panadol, yeah. तो मुझे याद I had a Panadol. So this is the Okay. biggest issue. This is one of the biggest issues. तो मुझे याद I had one पहली दफा, so I googled it. It said, don't have Panadol every day. Have it once in a while. आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है if you have it all the time. It's really bad for your mind. तो ये सारे these young men वो बैठे थे and they were studying. तो मैंने उनको पूछा था, यार, what do you guys think about Panadol? तो एक बच्चा ने क्या था, and he was drinking his Red Bull. So क्या था, यार, I have a Panadol every single night with my मेरे Red Bull के साथ. I'm like, dude, are you serious? He's like, oh, हाँ जी. तो then I asked him, I said, what are you guys learning right now? तो वो कहते हम अभी law सीख रहे हैं. तो मैंने क्या था कि I did the LSAT here, इधर का law exam जो है. तो मैंने उसको पूछा कोई law के बारे में. उसने कहा हाँ हम British law सीख रहे हैं. And I'm like, why are you guys learning British law? Like, what is that? So that's what I'm saying. It's so seeped into us. तो ये बच्चे सारे British law सीख रहे हैं. They're drinking their Red Bulls and their Panadol. It's messing them up. And इस वजह से पाकिस्तान में जो सबसे one of the biggest thing that's happening is the identity crisis. ये चीज मैं कह रहा हूँ, the identity crisis. कि we're trying to be जैसे आप कह रहे हो कि like the British. We're still trying to be American. हम Hollywood देखते हैं, कहते हैं that's the best place on earth. It's not the best place on earth. I'm from here. मेरी family इधर आई थी 110 साल पहले. 5 generations have been here, America और Canada में. It's not the best place. It's not. इधर आप देख रहे हो Black Lives Matter, the protests, सारी चीजें हो रहे हैं. I'm seeing all this. So that's what I would say to you is the identity crisis is so big कि हमको नहीं पता. जैसे ये महाराजा रणजीत सिंह की फिल्म मैं बना रहा हूँ. The big thing about that is that वो टाइम पे सारे मुसलमान हिंदू they were working together. और जो British आई थी, they kept beating them. So fakirs there was the Sikhs, they were working together and they were saying to the British, okay, and they were smarter than the British. But in the end, divide and conquer, divide and rule, won again. So that's why I say I do agree to your question that we are still just a fair, light skin is the best thing. अगर कोई आदमी चिट्टा है, oh, he's the best. That's all same stuff from the British. They yes, left, I was but moving to that point. I was asking question. I was moving to that point that why women is always being portrayed as a feminine beauty object. कि अगर वो खूबसूरत है, अगर वो गोरी चिट्टी है, अगर अच्छी फैमिली से है, तो आप उसको एज अ हीरोइन कास्ट कर लेते हैं. पाकिस्तान में ये एटलीस्ट माना जाता है. तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकल सकते? We have to. हमने इतने सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो that are beautiful and good looking that are not light skinned. There's so many of them, right? So we need to tell more stories like that as well. But that's the issue.
कि अगर हम मैंने ये भी बताना है कि अगर हमारी सोच है कि पाकिस्तान इज द बेस्ट, we're never going to get better. If we keep thinking पाकिस्तान सबसे अच्छा है, then you're not going to get better. The moment वो कहते हैं, the moment that you have pride, there's downfall after the pride. So we have to start realizing, जैसे अमेरिका में कहते हैं, America is the greatest country in the world. No, it's not. It's not. Same thing with Pakistan. अगर सारे लोग कहते हैं Pakistan is best and perfect, then you're never going to work on your issues. And that's the issue that I'm seeing right now. Is we're already the best. बेसिकली God, what worked? Go ahead. स्ट्रगल हमारी चलती रहने चाहिए, कोशिश हमारी साथ साथ चलती रहने चाहिए। अबूबकर, यू हैव ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज, आप क्या समझते हैं कि जो एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, वो आपसे भी डिस्कशन होती थी कि लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिख जो आपकी टीम में हिस्सा रहे हैं, मेरी भी उनसे गपशप हुई है, तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि वो लोग पाकिस्तान को अच्छे तरीके से पेश कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन एक हमारा पाकिस्तानी जब यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, एक्सवाईजी कहीं भी जाता है, वो बाहर वापिस आके पाकिस्तान को बुरा वाला कहने लग पड़ता है। वो अमेरिका में ये अच्छा था, कनाडा में ये अच्छा था, पाकिस्तान में ऐसा अच्छा नहीं है। तो आप रह भी वहां रहे हैं, आपने सुधारना भी नहीं है, आपने खुद को भी चेंज नहीं करना, और आप ब्लेम भी देते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होती है? आया इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्लीनिनेस का सिस्टम जो है, एनवायरमेंट उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर जाता है, ये अपने कंट्री की जो उसको कमी कोताहियां नजर आ रही होती है, वो उस वजह से डिसहार्ट होके इस तरह की बातों की तरफ आ जाता है? व्हाट कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड? I'm no expert on that, but I would say this कि यार पाकिस्तान में जैसे मैं कह रहा था कि if we're always thinking हम सबसे अच्छे हैं, then we go outside and then we realize we're not, that messes with your confidence as well. But also हम पाकिस्तान के अंदर invest नहीं करते यार. We talk a lot. हम बहुत सारे बात कर, we talk so much. हम ये करेंगे, we're going to do that, we talk a lot. But Pakistan में then the resources aren't used properly. Everybody's talking, but no one's really doing work. And that's what I realized, that in Pakistan, no offense, we're very lazy. We can become very lazy. And the reason why, just okay, if you have the same people that are in power, that have a lot of money, that have their big mansions, that have everyone doing work for them, all their servants are doing all their work, you get lazy. So Pakistan, we have to realize first and foremost, it needs work. That's the number one. It needs work. Yes, that's it needs work. But then what are tangible things to get to work at? And the thing is, it takes time. But abhi hamari jo generation hai, we need to start taking control in a sense and saying, look, let's start working. We can keep talking about why Pakistan is bad and all that, but let's start doing the work, yaar. The work is the hard part, but the work can also become very fun and fruitful. So that's what I would say to you is जो सारे लोग जो इधर बैठते रहते हैं, वो चाय पीते हैं, इधर सारे जो अंकल्स हैं चाय पीते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में आपने सुना जरदारी ने ये किया है, blah 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 blah. I'm like, look man, like this isn't solving anything. Everybody इधर सारे बैठते हैं और जब वो पाकिस्तान के बारे में बात करते रहते हैं, then I leave. I'm like, my God, these guys have no idea what's actually happening. So one thing I think we need to change is, yeah, we need to stop having breaking news every 5 seconds. How the breaking news. I'm like, stop. There's not breaking news every 5 seconds. Take a second. So ये news channel जो पाकिस्तान में, I think this is really bad right now. क्योंकि ये जो हम सारे लोग पूरी दुनिया में फैल रही है कि पाकिस्तान, it's all fake news यार. So much fake news, then so much just breaking this, breaking that. So उधर पाकिस्तान में, I'll say this, if you don't talk about the good things, then how are we ever going to focus on the good things? True. Yes. All the time it's always Very negative. true. Never something good, man. और इधर अमेरिका में सारे बैठे हैं, they're watching the negative news और वो कह रहे हैं हम save करेंगे. But I'll say this to you, the answer is that जो लोग पाकिस्तान को save करेंगे, it's the Pakistani people themselves. True. It ain't gonna be anybody else. It's not gonna be some guy from outside. Pakistan के लोगों के पास, they have the answers. So we have to start listening to them. बिल्कुल ठीक है आपने. इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा. It's a part of my question as well. Abu Bakar, when you are going to start any movie, short film बनाते हैं, आप टेलीफिल्म की तरफ जाते हैं, what are your basically parameters? किन बेसिस पे आप एक्टर्स और एक्ट्रेस को सेलेक्ट करते हैं? लाइक मैडम ने, मेरी को होस्ट ने बात की कि मोस्टली देखा जाता है पाकिस्तान में अगर गोरी रंगत है तो आप एक्टर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके पास फीमेल में गोरी रंगत है तो आप एक्ट्रेस के तौर पे आ जाते हैं. तो आप जब मूवीज बनाते हैं, प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपके क्या पैरामीटर्स हैं? किन बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हैं? कौन से पॉइंट्स आप सामने रखते हैं? तो जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हो या आप
बास्केटबॉल खेलती हो, आप देखते हो कि कोई ये सफेद आदमी है या ही स्किल्ड, क्या देखते हो? Talent. We talk about the talent देखते Talent, हैं हम. yes. So that's what I'm focused on. Even Hollywood admits you have to really be focused on the talent. और पाकिस्तान में अभी the boxes जो हम tick करते हैं, they're wrong. जैसे आप कह रहे हो, oh, she's fat, she looks good, but her acting is garbage. Then the film is not going to be good. You know what I mean? The script can be good, but अगर acting सही नहीं है, then the movie is going to be, it's not going to land. सही नहीं होगा. So a good film has everything proper. अच्छी script है, अच्छी casting है, अच्छे जैसे आप कह रहे हो actors. If someone is darker skinned, but they're extremely talented, यार, I'm going to choose that person. I don't care if you have light skin. Maybe I have light skin. So I have privilege. 100% मेरे पास ये privilege है. So I understand that I have this. But now we have to move forward from that, right? We need to start getting. क्योंकि पाकिस्तान में सारे लोग सफेद नहीं है. It's such a lie. The people, there's more people that are darker skin, and that is beautiful. I think we need to stop. We need to get away from just the British beauty standards, and even in our just जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, आप think about it. Everybody's listening. सारे ads जो हैं, it's a white person. Or it's a light skin. I'm like, these don't look. They're drinking Coca-Cola, or they're like, this doesn't look like a Pakistani. Where did this come from? So that's where we need to stop. It starts with media. क्योंकि जब एक आपने सुना Muhammad Ali जो boxer है, so when he was big, he used to say, black is beautiful. वो कहता था कि Yes. मैं beautiful हूँ. The reason he would say that is क्योंकि फिर जब छोटे बच्चे होते थे that were black, फिर उनके सोच में भी था कि black is beautiful. Hey, if he's saying it, it must be true. So we need more Yes. people in the media industry that are saying, hey, you know what? This is wrong. We need more people because we look up to them, right? We look up to them and they have influence. So that's kind of what my answer would say is that I don't care about your skin color. I want your talent. And that needs to Very be a beautifully, you widespread have thing. said that we need to accept ourselves, we need to accept our flaws as well. Because as being a younger generation, as being our forefathers, they're responsible for transmitting the norms, for transmitting the culture into our next generations. And if they are not trying the level, it means they are not doing anything. So, talking about the government, what is the basic role of Roshna, government I, in? I, I want to Yes, say I want to say one thing on that just before. yes, क्योंकि yes, yes, जब please, please. अभी पाकिस्तान में मेरा एक cousin था, he passed away very young. And what I'm seeing is that, yeah, identity crisis, because of this, a lot of young people are dying because of alcohol addiction, because of drug addiction. It's a true thing. You can pretend and lie that it's not happening, but it's happening. So that's where it goes back to हमारे पास वो confidence नहीं है कि who we We are. cannot hide from the reality. You can't hide from the कितने लोग मर रहे हैं और depression उनके पास है या anxiety है, ये सारी चीजें, it's real, it's a real thing. तो ये सारे लोग, they're all smoking hash or क्योंकि why? Because they don't know who they are. जब आपको पता है Yes, कि आप कौन हो और आपकी identity क्या है, then you're more grounded, more relaxed. पर जब आपको पता नहीं yes, है आप कौन हो, then you're trying to escape from it. You're getting drunk, you're drinking, you're smoking, whatever, to escape from who you really are. So that's my last point on that part is that's a big issue for our generation. Mental health is a very big yes. thing. Pakistan mein maine dekha tha too, around the world. But we need to Hmm. focus more on distilling that confidence in our people. But go ahead, your next question. Sorry about that. You have said a very beautiful thing that we need to accept ourselves. But how do we accept ourselves if that we just need to explore ourselves? जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी नेचर कैसी है, हमारी साइकी कैसी है, हमारी आदत कैसी है, हमें अपने आप में खुद ही प्यार हो जाता है. Thank you so much, Abu Bakar. But I just want to explore the role of government. That what kind of role has to be played by government? As you are living in Canada, you are living in abroad nation. तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या मीडिया को सपोर्ट कर रही है कंपैरेटिव टू पाकिस्तान? और अगर कर रही है तो कौन से ग्राउंडेड लेवल्स पर कर रही है और पाकिस्तान को क्या मजीद करने की जरूरत है? तो इन कनाडा वो गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे देते हैं कंटेंट के बारे में. इन कनाडा, अमेरिका इट्स नॉट लाइक दैट. इन अमेरिका वो प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है. यू हैव टू गो टू इन्वेस्टर्स टू गेट योर और स्टूडियोज. पर कनाडा में गवर्नमेंट बहुत पैसा देता है टू मेक कैनेडियन कंटेंट. So जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान में, it's like there's only the ISPR, which is they're making, it's about, we have to make war and military. It's great, that's fine, no, that's fine, but the content isn't that good, and then you're telling one type of story. So that's kind of where the government again should come in, because Imran Khan, Pakistan, a lot of people there don't like him, right? But in outside of Pakistan, people love Imran Khan. The world loves Undoubtedly. Imran Khan.
They love him. He's the best thing ever for Pakistan's public relations in the world. He really is the best thing ever. It's not Nawaz Sharif and it's Imran Khan. So because we have great PR with him, I think that now is a good time. जैसे अभी timing बहुत अच्छी है कि अब now you could go and say, look, we have to make good quality content and tell good stories. Like Turkey अभी इतने पैसे दे रही है, and Turkey is making it very easy to film there. तो पूरी दुनिया आती है Turkey में, and they all film there. They're making their movies. They put so much money in Turkey कि अब जैसे मैं कह रहा था at the beginning of the session, सारे लोग उधर जाते हैं travel के लिए. And Pakistan's security now is so good. Pakistan की security बहुत अच्छी है. I spent time. I've seen that Pakistan has done a great job on their security. Pakistan has again a great PR with Imran Khan, but what it's missing is the infrastructure, the tourism infrastructure. अभी यार मुझे याद है कि सारे white bloggers पाकिस्तान में आए थे. They showed Pakistan, but they don't know asli Pakistan. They're gonna go to Wagah border. They don't know about Golgappa on the side of the sea. They don't know about so many little details that only a real Pakistan, like a young Pakistani, maybe from outside, even trying to learn about their heritage, will understand the culture. So we need to start understanding that with the government के पास पैसे हैं, but they have to understand कि business, उसको कहते हैं इधर Hollywood में show business. Films are a business. So you have to make a really good film and understand that it has to make money back. So अब जब लोग अभी पैसे जब वो फिल्म बनाते हैं, they go into it with make no money return, जो भी. So my focus is as a producer is the business side. कि जो भी फिल्म मैं बना रहा हूँ, it has to make money back. So when Pakistan has one or two hit projects, फिर मुझे पता, फिर they'll realize, wait a minute, we need more hit projects like this. It just needs one or two to start. And then it'll expand. So what are your future targets? आपके future targets क्या हैं? किन projects पे काम कर रहे हैं? Like you were talking about history of Pakistan. अगर हम उसमें देखें तो Islamic point of view से भी है, environmental point of view से देखें, cultural heritage में देखें. So आपका focus क्या होगा if you get a chance to make any kind of picture or short film in Pakistan? आप किस पे focus करेंगे? Like जो कि हमारे audience या viewers में से कोई हमें सुन रहे हैं, इस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो इसको फॉलो करके एज अ बिजनेस और एज अ फेम के तौर पे देख सकते हैं. आपका क्या टारगेट होगा इसमें? तो मेरी कंपनी जो है प्रोडक्शन कंपनी, इसका नाम है डायस्पोरा क्रिएटिव. तो डायस्पोरा का मतलब है जो सारे लोग they're not living in their own country, they're living outside of it. So what my focus is मेरे जो सारा काम है, it's about bringing people together. That's my focus. So Pakistan में there's an example के there's Hindu temples, Sikh Gurdwara. There's a lot of things in Pakistan. हमारी interfaith history बहुत rich है. We have मैं एक mountain पे गया था, Tilla Jogiyan. So we went on this massive hike all the way up there, and they say that on the top there was he had Ranja or something. One of them went up there, and Ranja was there with the yogis. We have incredible stories that are focused on different faiths. So that's my focus. Just अभी मैं Ranjit Singh के बारे में, I'm telling that story on the interfaith aspect of it. And then at the end of it, I want more people to realize that Pakistan is a welcoming and open place. That the log, जैसे एक और story someone could tell if someone was interested, is जब मैं गया था उधर Khyber Pakhtunkhwa, like the past Khyber Pass पे, उधर के लोग, there's so many graves there. They've seen so much death, so much sadness उधर by the border. इतना sadness they've seen. But जब मैं उधर गया था, the log, they were so excited. They're like, we want to show you our home, we want to show you our place. And उनके आंखों में इतना प्यार था because they were so excited to share their love. Yeah, who doesn't want to share their love as a person? सारे लोगों, everyone, at the end of the day, हमारी जो basic human चीज़ है, we want to be loved and we want to love. That's the main maqsad. That's what we're trying to do. And so that's a story there. Okay, some filmmakers could go there and spend time with them and learn about their history and all of the Khyber Rifles. मैंने कभी नहीं सुना था Khyber Rifles के बारे में. Till जब when I met them, they're the oldest guard in I think all of like Pakistan and India. And unki kahani, it's so interesting, but no one's ever told that story. So these are the types of stories that I'm interested in. That I think that they're real stories, asli stories, man. I want to tell those types of stories that bring people together, not divide them. True, very true. बिल्कुल ठीक है आपने. अबू बकर, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा. लाइक हम लोग अमूमन देखते हैं, आपने हिस्ट्री की बात की, पाकिस्तान की बात की,
तो मोस्टली हमारे प्रोड्यूसर्स का फोकस होता है कि जो शूटिंग है आउट ऑफ द पाकिस्तान करें। हम पाकिस्तान की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना खूबसूरत कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है हमारे पास, हमारा पूरा केपीके भरा पड़ा खूबसूरती से। चश्मे देखें, दरिया देखें, पहाड़ देखें, मतलब जितना भी हम एक्सप्लोर कर सके कम है। तो इसके पीछे क्या रीजन होती है? हम बेसिकली शॉर्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर हमें एक अच्छा इमेज डेवलप करना होती है अपने मूवी के लिए, और ताकि मूवी हिट हो जाए हम आउट ऑफ द पाकिस्तान क्यों मूव करते हैं? मोस्टली हमारी अभी कुछ मूवीज आई हैं उसमें उन्होंने काफी बाहर की चीजें दिखाई गई हैं, लाइक इटली में, फ्रांस में, पेरिस वगैरह साइड पे शूटिंग करते हैं। पाकिस्तान को फोकस क्यों नहीं करते? इसके पीछे माइंडसेट बेसिकली क्या है? आई जस्ट वांट टू नो, माय ऑडियंस आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट माइंडसेट जो उनको मजबूर करता है पाकिस्तान से बाहर मूव करने को। वो Why तो so? सेम ही माइंडसेट है यार, कि अगर आपको नहीं पता आपके पास क्या है, then you'll never take care of it. तो अगर True. आपको नहीं पता कि Perfect. आपके पास इतना प्यार, like you have this beauty inside of you, then you're gonna go somewhere else to find beauty. तो यही पाकिस्तान की सेम चीज है। हम सारे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान is great, पर हमको नहीं पता हमारी हिस्ट्री। We don't know about our beautiful, जैसे आप कह रहे हो इतनी अच्छी जगह। This is new. अब सारे लोग बात करते हैं पाकिस्तान की टूरिज्म के बारे में, but this is very new, right? Like recently we focused more on it at this time. So इस वजह से I think that मेरी जो True. फिल्म है रंजीत सिंह के बारे में, हम सारे लाहौर, पाकिस्तान, सारे ये जगह दिखा रहे हैं। There's a really good video I can send you जो मेरे एक अच्छा दोस्त शाम ने बनाया पाकिस्तान के बारे में। So beautiful, done so well. It's only a minute and a half, 2 minutes long. It's only 2 minutes long. But I think to answer your question, why we keep going everywhere else, क्योंकि यार we just don't realize we have the beauty here. We have it here. It's there. And if we don't realize कि कीमती चीज हमारे पास है, like जैसे कोहिनूर, the biggest diamond पाकिस्तान में होता, it used to be here. Then the British took it and now it's on top of the Queen's उसके जो crown के ऊपर है, and she cut it in ताज के half. ऊपर, बिल्कुल। ताज के ऊपर, हाँ। तो that's the same thing कि हमको नहीं पता कि the कोहिनूर was from here, कि हम we have the gold here, हमारे अंदर ही है, पर हम पूरी दुनिया बाहर ढूंढ रहे हैं गोल्ड के लिए। So how are you ever going to be happy then? How is your content ever going to be really good? Right? You're always going to be chasing something else. पर जो answer सारी इधर ही है, अंदर है। Thank you. So we need to focus more on that, yeah. All right. Okay, Abubakar, I must say you are a true patriot of your own nation, of your own country, और आप इसको बड़ा पॉजिटिवली पोर्ट्रे भी कर रहे हैं। एंड वी ऑल मस्ट हैव अ पर्सन जो कि बाहर जाकर अपने पाकिस्तान को या अपने किसी भी नेशन को ऐसे ही उसका इमेज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। यू वर सेइंग अबाउट सो मैनी थिंग्स, बट आई वुड टॉक अबाउट इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस अपॉन आवर इंडस्ट्री। हम जब भी बात करते हैं बॉलीवुड की बात करते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे थे, you were used to watch a lot of Hollywood films, but you had no idea about the content of Pakistan. So basically, what kind of content are we producing right now, and what kind of influence are we having upon our minds in case of media, in case of industry, in case of filmmaking? I think someone sent a long message about the fact that we don't really know about our own culture or our own I Islam. was the name of that boy was Rana Shahir, I think. Yeah, He wrote I a like long it. message for you. Yeah, he He's did. your I read cousin, that. Abubakar. Oh, he is. Oh, there we go. I got another cousin. Assalamu alaikum, I don't know Rana. who is he, but I just noted his name. Yeah, no, that was what I was gonna talk about too. कि अभी पाकिस्तान में there's another division, क्योंकि उधर there's Raivinda and there's सारे जो तबलीगी जमात crew, there's that whole Islamic crew. And my focus, क्योंकि for it's weird, पर क्योंकि I was raised in that world as well, कि मेरे पास बहुत सारे family वो दुनिया में भी हैं, and जामिया में पढ़ता था मदीना में, I went and I spent time there, I spent time in Makkah. तो I think it's जैसे राना ये कहता है कि look, हमको इस्लाम का इतना नहीं पता, ये सबसे बड़ी चीज़ है। We don't really know about the Islamic principles. We don't. We talk, हम सारे कहते हैं अजान होता रहता है 5 दफा एक दिन में, पर लोगों के अंदर वो सुकून नहीं है। And that's the thing True, is बिल्कुल। that once you have that sukoon, your content will also have that type of sukoon. It's weird, but at the end of the day, like your content will really reflect your inner state. So we need to Yes. bridge that gap as well. Just there's too many extremes. We need to bridge the gap between the religious group in Pakistan. That's a part of Pakistan's identity. Bring the religious group closer instead of alienating them and उनको एक जगह रखना. It's tough,
right? Because no one's Pakistan की one of the biggest issues is लोग बात नहीं करते और सुनते नहीं है. सारे बात कर रहे हैं, but no one's listening. So that's Yes. what I think. That's why the identity is so divided. You have the rich, you have the poor, you have the religious, you have everyone's in a different extreme. But I think to Yes, be a true, we have a lot of class stratification here. हम yeah, अपने आप को डिवाइड कर चुके हैं that person is rich, that person is mediocre, that is middle person, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, उसके प्राइवेट जॉब है, तो हाँ, हम we judge a डिवाइड हो lot. चुके हैं. वो इस्लाम में भी कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह इंतजार करता है क़यामत के दिन के लिए, then he judges us. मैं कौन हूँ Yes. as an आदमी to judge you now? Who am I to judge you now? I'm nobody. I'm nobody, but Allah waits till क़यामत के दिन to judge us. So you're right, in Pakistan, oh, he's a government guy, oh, ये gym khana jata hai, he's like that. You know what I mean? We do put people in boxes. So I think that we need to answer that question, we need to bring the different identities in Pakistan cut together. And that makes what Pakistan is really all about. So until they're divided, we'll never really get the full scope of what it means to be quote unquote Pakistani. क्रिटिसाइज करना ज्यादा आसान है ना हम लोगों के लिए. Oh yeah, हम लोग बहुत जहां आसान है. बैठते हैं आराम से क्रिटिसाइज कर लेते हैं, हम नहीं देखते उसकी खिदमात क्या रही होंगी. हो सकता है वो अपने टाइम पे उस तरह से परफॉर्म ना कर सका हो, लेकिन हम बड़ा इजीली क्रिटिसाइज कर लेते हैं. इसीलिए हम लर्निंग फेज में नहीं एंटर होते और फिर हम कहते हैं कि Yeah. हमारा मुल्क भी पीछे चला गया है, हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, हम परेशानी पर का शिकार हैं. हम पीछे चले गए हैं, मुल्क नहीं. Stop blaming the मुल्क. It's about the बिल्कुल people. बिल्कुल बिल्कुल. It's about the people. I mean, that's the issue. हमारे लोग पीछे चले गए हैं. That's what it is. क्योंकि we think we're great. हम great हैं, and we don't want to do any work. That's like America. Actually, अभी अमेरिका ऐसे ही है. the problem is just that we are living in a crib जो कि superiority complexes के ऊपर based है. I'm superior, that person is inferior. I'm intellectual, that person is less intelligent. I'm beautiful, that person is not beautiful. तो हम इतने जजमेंटल हो चुके हैं, इतने अपने क्रिप्स में बिजी हो गए हैं कि हम दूसरे पर्सन की इमोशंस को, दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते. ओके, यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर एज वेल, क्योंकि आपने एक फिल्म मेकिंग के फील्ड के अंदर जो अपना डेब्यू लिया वो आपने अपने ऑन बिहाफ के ऊपर लिया. So what do you say that should there any kind of financial aid as well, या आप अपने बिहाफ के ऊपर अगर आपका पैशन आपके पास है, आप उसके अंदर मोटिवेटेड एंड डिवोटेड है, तो आप कर सकते हैं कुछ? No, I think ये जो भी creative and they have to be serious. Okay, this is a service. You should get paid. You should get paid. Okay, जैसे engineering है, जैसे being a doctor, ये सारा चीज, ये content it can be medicine for the mind, या zahar for the mind. So that's where I think that it needs to be, people need to get paid. क्योंकि if अगर वो भूखे मर रहे हैं trying to make content, it's not going to be that good either. It's a job. It's a very real job. Hollywood में, it's a very white people. It's a career for them. So ये जो सारे in Pakistan, we need to realize for a lot of kids, it should become a career. This is a career, and it's not a bad career because सारे लोग content ही देख रहे हैं, सारे YouTube पे बैठते रहते हैं, घर पे काम पे भी everybody's watching Netflix or जो भी है Amazon, everybody's watching it. You know what I mean? So सारे, like, you know what I mean? That's the funny thing, the irony. So I think people should get paid. If you're making content, you should get paid for it. Perfect. बिल्कुल अबू बकर, माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल को जब देखें तो आप पैरेलली काफी चीजें साथ साथ चला रहे हैं. तो हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, योर शोज, प्रोडक्शन हाउस, एंड इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग यू कैन ऐड अप, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सारी चीजें? No, तो जो मैंने सीखा again is that everyone has different shocks. We all like cricket, we do different things. So a person is not just one thing, right? But a person can be themselves. That's the biggest thing. How I manage all that is I have good teams. सबसे बड़ी चीज है यार कि you have to work with a team. You can't do anything alone. It doesn't exist. You can't do anything alone. Now in filmmaking, सबसे मुश्किल काम है, like without anyone. You can't do it alone. So that's how I manage things. I have a good team around me, alhamdulillah. Alhamdulillah. MashaAllah. Okay, so you are very much blessed that you are having that team. हम अपने कंटेंट में ये चीज लाजमी एडिट रखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड टीम क्यों फॉर्मेशन होनी चाहिए. So I would talk about my content in the dramas, my content in the media houses.
हमारे आजकल के ड्रामास चल रहे हैं, माइट बी यू आर नॉट वाचिंग दोस ड्रामास एज वेल, तो वहां पर मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे कंटेंट को दिखाया जा रहा है जो शायद वल्गैरिटी और नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग उस चीज से बाहर निकल आए कि हमारी हिस्ट्री क्या कहती है, हमारा रिलीजन क्या कहता है। यस वी डू बिलोंग टू अ मॉडर्न नेशन एज वेल, बट वी शुडंट इग्नोर द ट्रेडिशनल नॉर्म्स एज वेल। तो प्रॉब्लम क्या है कि ड्रामों में क्या प्रमोट किया जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप आर देयर, या उसके अंदर कोई किसी को कैसे डिफीट कर रहा है, कोई किसी को कैसे डिसीव कर रहा है, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम। तो आप पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है, आप उसको कंपैरेटिवली कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है, या बाकी नेशन अपने नेशन का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? तो जैसे आप कह रही हो कि पाकिस्तान के ड्रामे में इट्स बीइंग डिसीटफुल एंड इट्स अबाउट प्यार, तो जब आप That is my देखते हो कि personal opinion. I might be wrong. yeah it's true it's like oh वो mother in law वो इट इज सास बहुत खराब है उनके पास there's a fight and a झगड़ा। तो अगर आपकी फैमिली की यूनिट में there's no peace, then everything else is Hmm. screwed. And if all of our content is showing that the family is all divided and kharab and all that, then it's not going to be good. And that's why I agree that content may show the people what they can become. Unko dikhao ki, you Hmm. know, you can be better. You know, you can be someone that practices the good character and morals of Islam, which is ke logon ke piche don't talk bad about people behind their back. You know, small like little things that make a difference. Be confident, be kind to people. ये नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं कि you know what, मेरी इज्जत, oh my daughter, she's my izzat, and like, and it's all this rubbish that you're like, where did this come from? Islam? I'm very confused. Where did this come from? क्योंकि culture मैं आपको ये बता रहा हूँ, culture is always being made. Culture changes all the time. But Islam, Yes. it should stay consistent. Like, you mean the morals and values, that should stay consistent. हम अभी जैसे आप ये show कर रहे हो, you're changing the culture with this show. Hmm. Pakistan ka culture changes all the damn time. That's how the world is. So that's what I would say is that we need to change the soch of the people, and the way you ट्रू change the soch of the people is through content. And the way we do that again is, जैसे आप कह रहे हो कि why are we making this content? Intention, वो क्या कहते हैं इस्लाम में, निया. The niya is a big thing. What is the intention? Why are we making this content? To divide the people more? To make them feel inferior? Hmm. क्यों बना रहे हैं? Right? For ratings? That's the question we have to ask ourselves, I think, as a country, of why are we making this content? But once we have those hard, and it's mushkil. It's not easy to realize the problem is inside of you. It's not easy. Hmm. But after you do that, then you get sukoon. But if you keep pointing the बिल्कुल ठीक finger at everyone, वो कहते हैं कि जब आप उंगली एक आदमी, when you finger at one person, you have three fingers pointing back at you. तीन आपके like बिल्कुल there's three Yes. looking at you. So that's what I would say. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा अबू बकर। इसमें हमारे ऑडियंस में आपकी फैमिली में से ऑलमोस्ट सब लोग आपको सुन रहे हैं, और काफी लोगों ने मुझे सेशन से पहले पर्सनली मैसेज किया था कि हमारा नाम लेकर अबू बकर को सलाम कहना है आपने, बट ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा। काफी लोगों के आपने यहाँ पे कमेंट्स में देखे थे। आई वुड स्पेशली मेंशन डॉक्टर अली ताहिर राना, उन्होंने स्पेशल आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और अबू बकर, टॉकिंग अबाउट योर प्रोफाइल, टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, टॉकिंग अबाउट आवर होल नेशन, वी एक्चुअली आर नॉट हार्ड वर्कर्स एनी मोर। हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। आई वुड कंक्लूड माई वर्ड्स, मैं जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा इसी तरह से कि जो आपने सारी बातें की है ना, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं। वो आपने कहा कि सुनने में अच्छी हैं, लेकिन जब उस पे काम करना हम स्टार्ट करते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। हर इंसान, हर एक नौजवान जिसमें लगन है आगे बढ़ने की, मीडिया में जाने की, फिल्म मेकिंग में एक्टर बनने की, वो हर कोई अबू बकर भी बन सकता है। वो अबू बकर से अच्छा भी बन सकता है, अबू बकर से कम भी हो सकता है, लेकिन खुदा ने हर इंसान में सलाहियतें रखी हैं। बट थिंग इज दैट कि वो उसको पॉलिश कैसे कर रहा है, वो उसको Hmm. प्रेजेंट कैसे कर रहा है। हमेशा से एक मुसलमान होने के नाते हमारा फर्म बिलीव रहा है कि लॉयल्टी, सिंसेरिटी इज अबव एवरीथिंग। दैट्स व्हाट आवर इस्लाम टीचेस अस, दैट्स व्हाट आवर टीचिंग्स थ्रू आवर होल लाइफ। ये इस्लाम की जो बातें हैं, ये हमारी लाइफ को सुधारने के लिए हैं, ना कि हमें अपने कल्चर से, अपनी आदात को और रस्म रिवाज को छोड़ने की जरूरत है। मैं दुआ गो हूं अबू बकर आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, द वे यू आर डूइंग योर बेस्ट फॉर द पाकिस्तान, फॉर मेकिंग आवर कंट्री मोर ब्यूटीफुल। एंड आई एम होपफुल कि इन फ्यूचर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पे और डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे
और इंशाल्लाह मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है जहाँ पे स्टूडेंट्स को पॉलिश किया जाता है, जो उसका इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रमोट भी किया जाता है। मैं अपने सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टैलेंट मौजूद हो, हम उसको अबू बकर के हवाले जरूर करेंगे। इंशाल्लाह अबू बकर उसको पॉलिश करेंगे और अच्छा एक्टर एक्ट्रेस जो भी हमारे पास अवेलेबल होगी मार्केट में सामने आएंगे। एंड आई एम होपफुल कि अबू बकर हमें इसमें प्रॉपर कॉपरेट भी करेंगे। और खासकर जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तानियों के लिए रहा है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, वो या तो डिट्रैक हो जाते हैं या डीमोटिवेट होके अपना पैशन अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। अबू बकर, थैंक यू सो मच फॉर मैनेजिंग योर टाइम। कनाडा में इस टाइम सुबह के ऑलमोस्ट 6-7 बज रहे हैं और अबू बकर ने अपनी नींद को कुर्बान करके हमारे लिए स्पेशल वक्त निकाला। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। No, Thank you thank so you much. for Thank you having so me. much for Go ahead. sharing such beautiful words. But before moving towards my conclusion, I would like to move towards Abu Bakar Khan for sharing his own concluding remarks with our audience. I just wanted to say thank you both for having me. क्योंकि बहुत खुश हूँ, it's having these conversations, क्योंकि ये conversations के दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि सही बात। हम अकेले नहीं हैं। जब लोग को when people think that they're alone, that's very tough. जब लोग सोचते हैं कि यार मैं अकेले हूँ, ये सारा कुछ हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा, it's petrifying, क्योंकि फिर लोग they think that there's no way forward. एंड जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब मैं सारे यंग और इवन दिस ओल्डर पीपल उनके साथ मैं मिला था, what I realized was that बहुत सारे लोग ये conversation कर रहे हैं. There are a lot of people that are having this conversation, and सारे के दिल, the दिल craves substance, so it craves like प्यारी बातें, like अच्छी बातें. The heart wants that. It's easy. The heart doesn't like जब हम लोगों के बारे में खराब बात कर दे. Like, we don't really like that, but I think we've become used to that. So what I would say is that, just like you said, anybody that's interested in media or film, send me a message. My Instagram is the Chosen Khan. So the Chosen, CHOSEN Khan, KHN. They can message me. And just what I've also realized कि जब लोग, when they see an example, then they can be much better than that. So मेरी जो ख्वाहिश है is like that मैं भी मैं काम कर रहा हूँ, but become way better than me. And anything जो भी मैं मदद कर सकता हूँ, inshallah I'll do my best to help. इंशाल्लाह। But inshallah I think that we're moving on the right track कि हम ये conversations कर रहे हैं. So I think inshallah there's good things ahead. There's good things ahead. Alhamdulillah, Alhamdulillah, and we will continue so. Thank you so much, Abu Bakar, for giving us time and for having you here at the platform of FCDC Studio. I'm very sorry to my audience, to my viewers, के consecutively 2 दिन से मेरा phone नीचे गिर जाता है. I don't know why this is happening, but this is happening consecutively since 2 days. Okay, moving towards my concluding remarks, as Abu Bakar has said, so many motivational, so many positive, and so many productive things shared with us. So we need to focus upon ourselves. We need to explore ourselves. We need to know ourselves. Who am I? Because if we are going to know what we are right now, we will be able to do something more. We will be able to put something more productive, to put something more motivational and more motivated. तो हमें अपने बारे में पता नहीं होता. हम लोग क्या करते हैं? We people used to get more judgmental. हम judge करना शुरू कर देते हैं लोगों को, या हम क्या करते हैं? लोगों को blame करना शुरू कर देते हैं. So get yourself out from the blaming, from the judgmental. I'm so sorry. That's okay. I'm so sorry. I'm having a problem. So we You're should move excited. towards the end of this session. Thank you. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. Thank you, Abu Bakar. Allah Hafiz. Thank you both. Allah Hafiz. Allah.